Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos and subscribing the channel. सेंट्रल कॉनिकॉइड्स का टॉपिक कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में नॉर्मल से रिलेटेड एग्जांपल्स किए हैं और उससे पहले नॉर्मल्स को डिस्कस किया गया था विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल कॉनिकॉइड, पर्टिकुलरली इलिप्सॉइड। इस वीडियो में डायमेट्रल प्लेन, कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर्स, कॉन्जुगेट डायमेट्रल प्लेन्स एंड इनकी प्रॉपर्टीज एटसेट्रा डिस्कस करेंगे। सो डायमेट्रल प्लेन, सेंट्रल कॉनिकॉइड कर रहे हैं हम। दिस इज डीपी, डायमेट्रल प्लेन इज द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स। ऑलरेडी हम एक टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, लोकस ऑफ कॉर्ड्स विद ए गिवन मिड पॉइंट। सो क्योंकि यहाँ पर एलिप्सॉइड के रेफरेंस में बात हो रही है एंड कॉनिकॉइड के रेफरेंस में बात हो रही है, so we take the conicoid ax square plus by square plus cz square is equal to 1. So this is the conicoid and this is equation 1, and we consider a line which is passing through alpha beta gamma और जिसके DC's LMN हैं, LMN है। सो एनी पॉइंट, यहाँ से जो पॉइंट है वो होगा एक्सिस से V से, दिस इज R, सो LR प्लस अल्फा, Y इज MR प्लस बीटा एंड Z इज NR प्लस गामा। सो ये पॉइंट ऑन दिस लाइन, दिस इज अ पॉइंट ऑन equation 2 on line represented by equation 2. So distance of point of intersection of 1 and 2 from the point alpha beta gamma are the roots of the equation. So we write, so what will happen अगर ये intersect हो रहे हैं, 1 and 2, so intersecting point, so distance of intersecting point of 1 and 2, that is ellipsoid and line from the point alpha beta gamma जिससे लाइन पास हो रही है। सो लाइन पास हो रही है, इसका मतलब ये कॉनिकॉइड को सेटिस्फाई करेगा। सो ए LR प्लस अल्फा होल स्क्वायर प्लस बी MR प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस सी NR प्लस गामा होल स्क्वायर is equal to 1. So we are talking about distance of intersecting point of 1 and 2. So let's say this is ellipsoid and this is line and this is point alpha beta gamma. तो इस लाइन पर कोई पॉइंट है जो कि ये XYZ से डिनोट किया गया, ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी होगा तभी सेटिस्फाई करेगा। सो दिस XYZ इज हेयर, दैट इज व्हाई इट इज लाइंग ऑन कॉनिकॉइड। सो इसके जो रूट्स निकलेंगे वो डिस्टेंस होगी, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन को ओपन करते हैं। फर्स्ट हम आर स्क्वायर AL स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर प्लस 2R A अल्फा L, ये इक्वेशन कई बार अपीयर हुई, BM बीटा प्लस CN गामा प्लस A अल्फा स्क्वायर प्लस B बीटा स्क्वायर प्लस C गामा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. So this is equation 3. Here we have seen that this point XYZ, this is satisfying the conicoid. So we put this point and we have put it. Why this is satisfying? Because line is having intersection with ellipsoid. So suppose we have this figure, alpha beta gamma may be here, alpha beta gamma may be here somewhere. So when we write this x value, y value and z value in this equation here,
if we find roots of it, that will give us distance of the intersecting points of 1 and 2. 1 and 2 means this conicoid and straight line. So intersecting point is these. So suppose alpha, beta, gamma is here, then distance is here. If it is here, this is the distance. अगर हम इसे सिंपल टर्म में देखें तो जब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो इसके 2 रूट्स आते हैं, रियल एंड इमेजनरी, दैट इज अनदर मैटर. सो व्हाट वी डू व्हेन वी हैव कर्व जो कि एक्स एक्सिस पर जहाँ कट कर रहा है, एक्स की 2 वैल्यूज हमें मिलती हैं, तो सेम एंड दैट इज रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. इसी तरह यहाँ ये स्ट्रेट लाइन है और कर्व इससे इंटरसेक्ट कर रहा है, वहाँ कर्व एक्स एक्सिस से इंटरसेक्ट कर रहा है. यहाँ रफ एक आइडिया टू अंडरस्टैंड, आर पोलर कोऑर्डिनेट्स में होगा, सो दैट विल गिव अस द डिस्टेंस ऑफ दिस. सो नाउ वी आर टेकिंग this quadratic equation where r square 2r plus this constant term is equal to 0. If alpha, beta, gamma is the midpoint of the chord, because this is a chord, locus of chords with a given midpoint, हम लिख सकते हैं al alpha plus bm beta plus cn gamma is equal to 0. ये आर्टिकल हम ऑलरेडी कर चुके हैं. If alpha, beta, gamma is the midpoint of the chord, तो जैसे कि कहा कि अल्फा, बीटा, गामा कहीं भी लाई कर सकता है, एंड दिस इज कॉर्ड. ये लाइन देखिए, ये कॉर्ड है. देन वी हैव लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड से ये आर्टिकल हम कर चुके हैं, ए एल अल्फा प्लस बी एम बीटा प्लस सी एन गामा इज इक्वल टू 0. ये कॉर्ड्स जो हैं वो पैरेलल हैं, सो एल एम एन आर फिक्स्ड, देयरफॉर द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट अल्फा, बीटा, गामा फ्रॉम दिस इक्वेशन से 4 is the plane ALX plus BMY plus CNZ is equal to 0. Since the chords are parallel, so LMN are fixed, and therefore the locus of the midpoint alpha, beta, gamma from equation 4 is the plane ALX plus BMY plus CNZ is equal to 0. Therefore, the equation of the diametral plane or the locus of the midpoints of system of parallel chords with DC's element is this one, which passes through 0, 0, 0 of the conicoid. So 0, 0 is center of the conicoid, so it is passing through center. Now instead of ax square plus by square plus cz square is equal to 1, suppose the ellipsoid is x square upon a square plus y square upon b square plus z square upon c square is equal to 1. Then the equation of diametral plane is Lx upon a square plus my upon b square plus nz upon c square is equal to 0, which bisects a system of parallel chords of the ellipsoid with DC's element. Example is, show that every plane through the center is a diametral plane of the conicoid. सॉल्यूशन, हम एक प्लेन लेते हैं ax plus by plus cz is equal to 0, that this passes through the center of the conicoid. So this is one, be any plane through the center of the conicoid.
यही हमें एवरी प्लेन थ्रू द सेंटर, इसी को हम लेकर चल रहे हैं। कॉनिकॉइड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1. This is equation 2. This plane may be diametral or not, so we assume this plane is diametral. So if one is diametral plane of 2 corresponding to direction cosines LMN, say, then one is same corresponding to LMN, say these are DCs, then equation 1 will be same as ALX plus BMY plus CNZ is equal to 0. We can compare equation 1 and this equation of diametral plane and can write AL upon capital A is equal to BM upon B is equal to CN upon C, or we can write L upon A is equal to M upon B is equal to N upon C. Direction. Therefore, the plane 1 is a diametral plane corresponding to the direction A upon A, B upon B and C upon C. Next is conjugate diameters and conjugate diametral planes. We take ellipsoid x square upon a square plus y square upon b square plus z square upon c square is equal to 1, and let P is a point x1, y1, z1 be any point on ellipsoid 1, and center of ellipsoid is 0, 0, 0. Then the DCs of the line OP, this we will denote by O. Then the DCs of line OP are x1, y1, z1, x1 minus 0, y1 minus 0, z1 minus 0, and the equation of the diametral plane of the line OP from the equation Lx upon a square plus my upon b square plus nz upon c square is equal to 0 is x1 upon a square plus y1 upon b square plus z1 upon c square is equal to 0. Now we take another point. Let q x2, y2, z2 be any point on this place, so it will satisfy the equation of the plane, and it is on ellipsoid also, this point, and on the ellipsoid, as I said, it will satisfy this condition. So x1, x2 upon a square plus y1, y2 upon b square plus z1, z2 upon c square is equal to 0. This relation, which we can say 2, this relation is the condition that the diametral plane of the line OP should pass through the point Q on the ellipsoid. Diametral plane of line OP should pass through
the point Q on the ellipsoid. But from the symmetry of the relation, we also conclude that the diametral plane of the line OQ passes through the point on the ellipsoid, means converse. From the symmetry of the relation to we also conclude that the diametral plane of the line OQ passes through the point P on the ellipsoid. पहले OP लाइन थी and Q point was on ellipsoid and it was passing through ellipsoid and Q was on plane also. Now here we have taken line as OQ and P is the point. Now if the diametral planes of OP and OQ intersect in the lines which cuts the surface of the ellipsoid in the point R, then R lies on the diametral planes of OP and OQ, and therefore P and Q are on the diametral plane of the line OR, that is on the plane equation of OR. Say R is x3 y3 z3, so it will be x3 upon a square plus y3 upon b square plus z3 upon c square is equal to 0. The diametral plane of OR is the plane OPQ. Similarly, the diametral planes of OP and OQ are QOR and ROP respectively. The diametral planes of OP and OQ intersect in the line. When the plane intersect, they give you a line which cuts the surface of the ellipsoid in the point R, and R is x3 y3 z3. Then R lies on the diametral planes of OP and OQ, and therefore P and Q are on the diametral plane of the line OR, and उसकी इक्वेशन क्या होगी, that is on the plane की इक्वेशन क्या होगी, x3 upon a square plus y3 upon b square plus z3 upon c square is equal to 0. Therefore, the diametral plane of OR is the plane OPQ, and similarly for OP is QOR, and for OQ plane is ROP respectively. अब डेफिनेशंस जो हैं कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर्स की और कॉन्जुगेट डायमीट्रल प्लेन्स की, एंड रिलेशन बिटवीन